क्वेश्चन क्यों? तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? सिर्फ टेम्परेचर काफी नहीं है ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर अगर मान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डेंस हो गया, तो एयर मास सिंक करना चाहिए ना। सिंक करना चाहिए ना। एयर मास इसलिए सिंक नहीं करेगा बिकॉज एयर मास एक्सपैंड्स। क्यों एक्सपैंड करेगा? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, उस पर दबाव कम होगा तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा। जब एक्सट्रीम कूलिंग हो गया, एक्सट्रीम कूलिंग मींस टेम्परेचर इज -5 -10 एट दैट हाइट, तब जाकर कहीं एयर मास सिंक कर पाएगा। या बहुत इंस्टेड ऑफ हीटिंग इट और इंस्टेड ऑफ दैट MALR वो बहुत तेजी से ठंडा होते जा रहा है, तब जाकर कहीं सिंक करेगा। एटमॉस्फेयर में नहीं, तभी तो बारिश होगा, तभी तो अनस्टेबल कहेंगे उसको। अगर वो सिंक किया तो रेनफॉल नहीं होगा ना। डिक्रीज vapor pressure or not atmosphere, vapor pressure of water will decrease. अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम होता then evaporation would have increased. Vapor pressure in two cases, vapor pressure of liquid and vapor pressure of atmosphere. अगर salt ऐड करने से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम होता then evaporation would have increased. सॉल्ट ऐड करने से, कहाँ सॉल्ट ऐड हो रहा है? पानी में, तो वेपर प्रेशर किसका कम होगा? पानी कम हो जाए। वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉट ऑफ लिक्विड। इट इज इनवर्सली, अगर कम वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन, वेपर का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। अगर वेपर प्रेशर पानी का कम हो रहा है मतलब इवापोरेशन नहीं हो रहा है, राइट? देन यस, नहीं, सुपर कंडेंसेशन तो सिर्फ कन्वर्जन है ना। सुपर सैचुरेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन। हमने भी कल यही पढ़ा, कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रहा है या ज्यादा है तो कंडेंसेशन होगा। वी मेंशन यस्टरडे आल्सो, वी आल्सो डिड द सेम। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या सुपर सैचुरेशन आने पर ही कंडेंस होगा पानी? नो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा 70, 80, 90, कंडेंसेशन विल कंटिन्यू। कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का डिफरेंस समझिए। कंडेंसेशन सिर्फ एक कन्वर्जन प्रोसेस है, वेपर से कन्वर्ट हो रहा है पानी वाटर ड्रॉपलेट्स में, दैट्स द कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन मींस फॉल ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म। तो पानी जब गिरेगा, क्यों गिरेगा? क्योंकि पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, राइट? कन्वर्जन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब द वेपर कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज हायर, एयर मास में ज्यादा, तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो ज्यादा कंडेंसेशन होगा, राइट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 to 30 हो गया, कंडेंसेशन बढ़ा। 30 to 50 हो गया, कंडेंसेशन हो गया। 100 हो गया, कंडेंसेशन हो गया। 100 लगभग ऐसा कंडीशन हो गया कि जितना भी वाटर वेपर है दैट इज ऑल कंडेंस्ड, बट डज नॉट मीन प्रेसिपिटेशन। इस वक्त क्लाउड्स बना एटमॉस्फेयर में, इज इट रेनिंग? कैन क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट कंडेंसेशन? तो मतलब कंडेंसेशन हुआ है बट प्रेसिपिटेशन उस जरूरी नहीं है। प्रेसिपिटेशन की एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है? सुपर सैचुरेशन लेवल मोर देन 100%। इसके अलावा भी एक देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन थियरीज ऑफ प्रेसिपिटेशन। सुपर सैचुरेट होकर के भी हो सकता है बारिश ना हो,
वहीं से कॉन्सेप्ट आता है आर्टिफिशियल क्लाउड और आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन, राइट? बिकॉज अभी पढ़ेंगे आप, एक थियोरी है कोलिजन कोलिशंस प्रोसेस इन विच विल बी लुकिंग एट दैट प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. कंडेंसेशन जब होगा इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ऐसा कब हमने हमने दो पॉइंट पढ़ा कंडेंसेशन का, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कूलिंग ऑफ एयर, राइट? कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन का कोई लेना देना नहीं. कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, तो कंडेंसेशन इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन. हमने कल कहा अगर वाटर वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड चल रहा है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा. क्लियर विद दिस? एनीथिंग एल्स? Spatial distribution of relative humidity. What is the doubt in that? We also have a very low temperature. अब जब टेम्परेचर बहुत कम है तो हीट होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज वेरी वेरी लेस. Not be a major factor. क्यों नहीं होगा? इवन इफ इवेपोरेशन इज वेरी वेरी लेस, पोल्स पर इवेपोरेशन काफी कम होता है. क्यों कम है? क्योंकि टेम्परेचर ही कम है, और टेम्परेचर अगर कम है तो हीट जो कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, वो भी बहुत कम है. तो इफ एयर इज कंटेनिंग जस्ट 2 grams ऑफ वाटर वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, उसका कैपेसिटी भी 2 ही है या 3 है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा होगा, राइट? सब ट्रॉपिकल रीजन में इवेपोरेशन कम है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है. क्यों कम है? क्योंकि हाई प्रेशर है. अभी नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे या जीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन. मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर देयर इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन. क्यों? सबसिडेंस होता है एयर का, दैट्स व्हाई वी हैव लेस इवेपोरेशन. तो टेम्परेचर इज हाई, इवेपोरेशन इज लो, आरएच इज लो. क्लियर? पोल्स में फर्क कहां पर पड़ेगा? मॉइस्चर कंटेंट कम है लेकिन हीट होल्ड क्या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज आल्सो वेरी लेस, तो परसेंटेज टर्म्स विल शो हायर. क्लियर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ओनली, it is also about the capacity, right? For example, we were having this classroom in 4, the bigger classroom, percentage of जो density था वो कम था. Then we shifted to this classroom, suddenly it looks like relative humidity has increased, isn't it? Why? Because capacity has decreased. Same thing. तो वहां पर हम ट्रॉपिकल रीजन में थे, यहां पर हम पोलर रीजन्स में, नंबर उतना ही है बट कैपेसिटी हैज डिक्रीज, सो लुक्स लाइक मोर फुल, राइट? धीरे धीरे करके और छोटी क्लास में जाएंगे हम. एटलीस्ट आई कैन से माय क्लास वाज फुल, हाउसफुल था, राइट? हाउसफुल में कोई थोड़ी लिखता है कि कितना सीट्स है, 4 सीट है, फुल है. Who says whatever Google says is correct? ये नो रिलेशन, दे ऑल जानी दुश्मन है, राइट? अभी प्रेशर पर चलते हैं तो वो ज्यादा वहां पर हम देखेंगे. If you take this as a rule that pressure is directly proportional to temperature, we may not understand a lot of concepts. If you consider pressure as inverse to temperature, we again will develop a lot of confusion. It will never be constant, it will never be same. इसीलिए
याद करिए, अगर आपने जीएस का कुछ क्लासेस में बार बार मैं इस पॉइंट पे एम्फसाइज करता रहा कि लॉज और प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, हम ज्योग्राफी में उनको फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज आप एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ले लेंगे कि प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्स टू टेम्परेचर, प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्ट टू टेम्परेचर। दे आर नॉट ट्रू। जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, उस टाइम पर आइडियल गैस भी है। जैसे वो कहते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एटसेट्रा। वी डोंट हैव आइडियल गैस कंडीशंस इन एटमॉस्फेयर। पार्टिकल्स आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एटमॉस्फेयर। तो जो आपने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग, बट शुड वी और कैन वी अप्लाई द सेम कंडीशन इन एटमॉस्फेयर? नॉट पॉसिबल, राइट? दैट्स व्हाई हमेशा इज अ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। प्रेशर पर आएंगे, विल डिस्कस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, but main discussion is about stability and instability, atmospheric stability and instability, that is the main discussion today। और मैंने कल भी कहा था हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे आज, अगर जल्दी खत्म हुआ तो क्लास ओवर, नहीं खत्म हुआ तो आप तो फ्री है ना 5:30 के बाद? क्या दिक्कत? कौन सा सभी जीएस क्लास रोज अटेंड करते हैं? एटलीस्ट ज्योग्राफी तो नहीं करते, जीएस ज्योग्राफी आप घर पे देखते तो मिल जाएगा क्लास, ऐसा क्या? यू आर इन दृष्टि, टीचर्स दृष्टि में जेब में है, क्या दिक्कत? So let's come to this discussion on stability and instability। I'll start where we ended yesterday। We had mentioned about some lapse rate, moist adiabatic lapse rate। तो हम evaporation और condensation को full stop करें। We understand that, remember condensation का मतलब बारिश नहीं है, बस please understand this, right? Because the way we read in the book and the kind of image that they give us कि condensation है तो बारिश है, नहीं, condensation होता बारिश होता तो every moment we'll get some rainfall, right? Condensation is a process of conversion, it doesn't mean the fall of water। जब fall of water है we call that as precipitation। Otherwise every cloud that is formed would have caused rain, and we know there is only one type of cloud that causes rain, nimbus cloud। इसके दो फॉर्म्स होंगे, cumulonimbus and nimbostratus। Otherwise there is no other cloud that forms rain। there are cirrus clouds, there are altus cloud, but बारिश हर कोई नहीं करेगा। कर इसको, इस कंफ्यूजन को वहीं पर रहने देते। लेट्स कंफ्यूजन बहुत सारे हमारे लिए, तो कल की क्लास जो लास्ट डिस्कशन था उस पर वापस चले। वी हैव डिस्कस्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। यू क्लियर विद एडियाबैटिक प्रोसेस? अ प्रोसेस वेयर हीट एक्सचेंज इज लिमिटेड, everything is taking place within the air mass only। जो भी changes आएगा air mass में वो due to expansion and contraction or mechanical changes that are taking place within the air mass। if the heat is exchanged with the surrounding we call it as diabatic। और third system होता है, like if you have read about systems in school days or otherwise, systems में तीन systems होते हैं, one is closed, one is open, another is isolated। in geography we will not be discussing isolated system कहाँ बना पाएंगे हम? labs में। we either have a closed system or an open system। and systems approach in geography ऐसा करके एक टॉपिक है in your model and theories and geographical thoughts। you will not be losing the concept of system even in human geography। the entire scientific way of studying geography, entire जिसको हम कहते हैं ना कि systematic way of studying geography is based on system। we consider everything into a systematic manner। so what is system? what is system? exchange हो रहा हो, फिर क्यों कहते हैं आप यहां का सिस्टम खराब है? दिन में 4 बार तो बोलते होंगे कम से कम यहां का सिस्टम ही खराब है। व्हाट इज दैट सिस्टम? सेट ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड गिव्स राइज टू अ यूनिफाइड फंक्शन, दैट्स कॉल्ड एज सिस्टम। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स giving rise to a unified function, they all work together for a particular function। वो सिस्टम अप्रोच है, there are different components in it। now the components that we are discussing is in air mass। component that we are discussing within the air mass is moisture, right? the system that we are discussing in air mass is temperature, the system that we are discussing is atmospheric pressure। ये सब प्रोसेसेस, ये सब कंपोनेंट्स बनाएंगे जो आज का डिस्कशन है। आई विल रिपीट व्हाट वी हैड मेंशनड यस्टरडे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अटेंडेड यस्टरडेस डिस्कशन। एनीवन हु हैज नॉट? व्हाई नॉट? कल का क्लास नहीं किया क्या? बट क्यों? व्हाई नॉट? तो जब ट्रैवल खत्म हो गया होता तब देख लेते, 5 घंटा था। व्हाई नॉट? फर्स्ट क्लास तो नहीं ना किसी का? फर्स्ट क्लास डेमो है क्या? चलो मैं कोशिश करूंगा अच्छा पढ़ाने की, बट सिंस यू हैव टेकन द एडमिशन आप मुझे डर नहीं है। अगर आपने डेमो होता तो मैं फिर अच्छा, राइट? इफ इट वाज अ डेमो क्लास, बिकॉज आप एडमिशन ले गए आप क्या डर? let's talk about life। okay, why am yesterday's class is very much relevant to today's class यार। ये दो क्लासेस साथ में नहीं पढ़ा तो फिर नहीं समझ में आता।
है और it will be problematic otherwise. Let us suppose, try to understand what we have discussed yesterday. जिन्होंने नहीं किया कल का क्लास, कैसे भी करके रिलेट करिए इस पॉइंट. I'll repeat. Water vapors are warm, they are hot. Why are they hot? Because they contain latent heat of evaporation. हम उसको latent heat का नाम देते हैं, you're clear about it. So, whenever air is absorbing heat and it absorbs water vapors, that indirectly means it is storing heat in the form of water vapors. On an average, 1 gram of water vapors has a latent heat of nearly 583 calories. Depends upon conditions. तो approximately हम 600 calories कहते हैं. 1 gram of पानी में 600 calories of latent heat. So when the the water is in the vapor state, it is in the vapor state because it has possessed lot of heat, right? Latent heat. The air rises up due to multiple factors. It can be convection, orographic, frontal. किसी भी कारण से मान लेते हैं कि air mass rise करते चले जा रहा है. And it elevates by 1 kilometer, atmospheric pressure decreases, suppose, and the air mass undergoes expansion. So we can call it as it undergoes cooling by the process of expansion. The thermal cooling that happens here is due to the heat getting distributed within the air mass. तो पहले इसका volume कम था, अब volume बढ़ा. Suppose if the temperature of the air mass is decreasing, why is it decreasing? Is because expansion. And mentioned yesterday also, it will not behave normally as the atmosphere does. Right? In atmosphere, if we elevate by 1 kilometer, the average decrease of temperature is 6.5. हम इसको environmental या normal lapse rate कहते हैं. In this particular case, if the air mass is rising, after all air mass तो atmosphere का ही part है ना, so we expect the temperature of this air mass to decrease at the rate of 6.5, but because it contains a lot of vapors release heat, right? Vapors release heat and get condensed. Vapors से water droplet state में कब होगा? When will this conversion take place? Only when the vapor is cooling down. So you take a cold glass of water, you'll find condensed water droplets. Why is it condensed water droplets? Is because water vapor that is present in the room, it comes in contact with a colder surface and lose their heat. Heat lose करेंगे तो वो vapors water droplet के form में convert होगा. So this release of heat, इनके पास जो heat था, that is latent heat. The release of heat is also latent heat, called as latent heat of condensation. So it is not going to be different than the latent heat of evaporation. Difference क्या है? It is a deposit. Latent heat of evaporation is the heat that is deposited. Latent heat of condensation is the heat that is stored. Right? And the latent heat of condensation is the heat that is spent, that is released. Right? So यहाँ आपने fixed deposit किया और यहाँ वो release होते जा रहा है. Right? So if the temperature expected at this height was to decrease at the rate of 6.5, but because of latent heat of condensation release, the rate of decrease of temperature is less than 6.5 degrees Celsius. Just to make simpler calculation, if this air mass had a temperature of 10 degrees Celsius near the surface, 1 किलोमीटर के बाद हमें उम्मीद थी कि टेम्परेचर कितना होगा? 3.5, because 10 minus 6.5. Now you will see that temperature is not 3.5, instead it is 5 or 6 or slightly higher than that. वो 3.5 क्यों नहीं हुआ? 5 क्यों हो रहा? क्योंकि latent heat, जो अभी तक छुपी हुई heat थी, with the vapors, it has got released. Then again and again saying that this 1.5 degrees Celsius extra heat, extra temperature is because of latent heat of condensation. Right? So in normal conditions, moist conditions,
moist air masses will follow a certain lapse rate, which is referred as moist adiabatic lapse rate, जिसका एक एवरेज वैल्यू हम देखते हैं 3.5 से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तक है एवरेज वैल्यू. Why is it a range? Because it all depends upon how much of the moisture is carried by the air mass. अगर एयर मास के पास मॉइस्चर ज्यादा है तो ज्यादा लेटेंट हीट है, मॉइस्चर कम है तो लेटेंट हीट इज लेस. We are getting this point, everyone. So we call it as moist adiabatic lapse rate that varies by so and so. Everyone is crystal clear about this concept? कोई confusion इसमें? Okay. Let us see. First we'll develop concepts, उसके बाद हम लिखेंगे and then we'll apply all of these. इसको थोड़ा ignore करते. If I go by the percentage of water vapor present in an air mass, how do we define dry air? Less than 0.9% of water vapors. Moist, that is considered as drier air. And moist, we understand anything that is more than 0.9, 2-3% का अगर पानी water vapors है, that's considered as moist condition. So we'll see three conditions first. एक condition को देखते हैं moist air mass. Second, I'm writing it as normal condition that is prevailing in the atmosphere. And third is dry conditions. In moist air, the percentage of water is 2 to 3. Here it is 0.9. Here it is 0.2 or 0.3%. इन तीनों कंडीशंस में लेटेंट हीट सबसे ज्यादा कहां रिलीज होगा? मॉइस्ट में. मैक्सिमम लेटेंट हीट इज रिलीज एट मॉइस्ट. लीस्ट लेटेंट हीट विल बी रिलीज एट ड्राई. तो नॉर्मल कंडीशंस में लेटेंट हीट तो रिलीज होगा यहां पर भी. आफ्टर ऑल एटमॉस्फेयर है, इट कंटेन्स मॉइस्चर, सो देयर इज अ, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ऑल्दो वी नीड नॉट टू राइट दिस, नॉर्मल latent heat released. That is, condensation process is not that aggressive condensation, it's a normalized condensation, normally जो atmosphere में होता है 0.9% के हिसाब से. The lapse rate that we get is here 6.5. जहां पर latent heat ज्यादा है, like moisture content is higher, we have more latent heat released. More latent heat is released. If more latent heat is released, compensation है, मतलब सब्सिडी मिल रहा है वाटर वेपर्स के थ्रू, छुपी हुई हीट बाहर आ रही है, तो लैप्स रेट इज लेसर. राइट, खर्चा हो रहा है लेकिन कम रेट पे खर्चा हो रहा है. एयर, द हीट इज गेटिंग स्पेंट, इट इज कूलिंग बट नॉट एट द सेम रेट, एट अ लेसर रेट. सो दैट इज कॉल्ड एज moist adiabatic lapse rate. That is 3, you make average value ले रहा हूं 5 degrees Celsius per kilometer. So all lapse rate is determined by moisture content, water vapor content. किस रेट पर एयर मास ठंडा होगा हाइट के साथ, ये कौन डिटरमाइन करता है फाइनली? लेटेंट हीट. जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो लैप्स रेट कम है. नॉर्मल कंडीशंस, अब जहां पर लेटेंट हीट है ही नहीं, लाइक वाटर वेपर्स आर नॉट देयर, लीस्ट लेटेंट हीट इज रिलीज्ड. Very less amount of latent heat is released because water vapors are not there. So will the air become cool fast or it will take time to cool down? Fast cooling. Clear? With elevation, it is fast cooling. Why is it cooling rapidly? It's because there is no subsidy. There is no compensation coming from water vapors as they are absent. So the rate at which temperature decreases in an air mass is way higher than the normal and moist rate. Or that equals to, on an average, 10 degrees Celsius per kilometer. Again, depending upon ये 0.3 है या 0.2 है या 0.4 है. Average lapse rate here is 10 degrees Celsius per kilometer. We call it as dry adiabatic lapse rate. So तीन तरह के lapse rates. The entire stability instability topic is dependent upon these three types of lapse rate and three conditions. One is called as normal lapse rate.
Another is moist adiabatic lapse rate. Third is dry adiabatic lapse rate. Dry is 10 degrees Celsius per kilometer. Normal is approximately 5. And then normal is 6.5. और जो moist है that is approximately 5. Anyone not clear about this point? We'll go step by step in this topic. मैं नहीं चाहता क्योंकि probable questions में होता है एग्जाम में. Almost every second, third year you'll get this question on stability and instability. I really don't want you to miss on this topic. बहुत easy है, but conceptually you should be clear. लॉक करें? Final. Okay, very good. So, moisture therefore plays a very significant role in determining atmospheric conditions. Right? Let's see. First, we'll define what is a stable air mass, and then we'll define what is unstable air mass. The stable air mass पहले देखते हैं क्या है. What is stable condition? In climatology, the stable atmospheric condition mean clear sky conditions. There is no cloud cover, everything is okay, insolation is higher, clear sky condition is considered as stable. कहते हैं ना आज मौसम साफ है. What does it mean? Clear sky. And then we'll see unstable condition. If air mass is static, मतलब अपनी जगह पर है, वो ना राइज कर रहा है और ना सिंक कर रहा है, stable air. If an air mass is sinking, again conditions are stable. Can in yesterday's discussion, relative humidity को याद करिए, can subsiding air mass cause rain? No, क्योंकि जैसे ही air mass subside करता है उसमें temperature increase होने लगेगा. Getting this point? Subsidence inversion याद है? If the air mass is continuously subsiding, it will undergo a lot of compression, etc., friction, etc., and the temperature, instead of decreasing, it will increase rapidly. So if temperature increases, humidity capacity also increases. If humidity capacity increases, relative humidity decreases. और किसी भी कंडीशन में सैचुरेट नहीं हो पाएगा एयर. Getting this point? So I'll repeat this point as stable air. Suppose this is an air mass and air mass is sinking. The sinking air mass will undergo heating process. Increase in temperature increases humidity capacity. और relative humidity को जरा याद करिए. What is relative humidity? We discussed that total amount of what absolute humidity upon humidity capacity. अगर humidity capacity बढ़ते जा रहा है, वो पहले 15 था, फिर 30 हो गया, फिर और increase हुआ, what happens to relative humidity? Decreases, and therefore cannot cause rain. So subsiding air masses do not cause rain, or even if the air mass is at stable state, it is not changing its height, it will also be called as stable conditions. That is why in climatology we will be using that during winters or in the desert regions, subsidence of air masses will bring stable atmospheric conditions. क्योंकि subsiding air mass अगर हो रहा है ना तो उसमें temperature changes भी आएंगी, बढ़ेगा temperature, relative humidity will decrease, right? Because the capacity is increasing. इसको लॉक करें. Now what is a unstable air? What is an unstable air? Suppose it is an air mass and the air mass is rising, it is going to the higher altitudes. इसमें सबसे पहला change जो आएगा, temperature कम होगा. किस rate पर कम हो रहा है कहानी छोड़िए, but temperature is decreasing. Due to decrease in temperature, relative humidity increases, or eventually it becomes unstable air. It can cause precipitation. Is everyone clear with what is stable air and unstable air? तो अगर air mass continuously rise करता जा रहा है, if the air mass is rising, it will bring
unstable conditions. If air mass is subsiding, it will bring stable atmospheric conditions. ये line clear? Any confusion in this? पक्का? कसम खा के? Yes. कल तो आप आए थे क्लास में, राइट? याद करिए जब शुरुआत किया हमने, which part of air should have more water vapors, upper part or lower part? Lower part, है ना? ऊपर कितना बड़ा रूम है हमें से कोई मतलब नहीं. Water vapors can be present only in the lower layers of air, right? टेम्परेचर कम होने से क्या होगा? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगा. क्यों कम होता है? बिकॉज देयर विल बी मोर कंपैक्शन. कंपैक्शन क्यों होगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल कम क्लोजर, नाइट्रोजन विल कम क्लोजर, ऑक्सीजन विल कम क्लोजर. तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस फॉर वेपर्स, विल दे एग्जिस्ट? नो, राइट? इसीलिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होता चला जाएगा. वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है. अंडरस्टैंडिंग? Humidity capacity is not about volume. It is about lower layers, can they accommodate water vapors or not? Right? अगर टेम्परेचर कम है तो लोअर लेयर्स accommodate कर पाएगा पानी को? No, humidity capacity decreases. Clear? Otherwise तो humidity capacity infinite होता है एटमॉस्फेयर का. I mean, think about this. Troposphere is 12 kilometers. Leave about stratosphere. Imagine a line that you are drawing 12 kilometers vertical and draw a circle around you. कितना पानी इकट्ठा हो सकता था? कभी बारिश ही नहीं होता. Isn't it? So why is it that it is only the lower layers of atmosphere, lower layers of the air mass that we can contain water vapors? तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो लोअर लेयर्स में कंपैक्शन बढ़ेगा. किसका? गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, and humidity capacity decreases. Done? Stable, unstable, clear? पक्का? Sure? इसके बाद मैं explain नहीं करूंगा what is stable, what is unstable, what is all this. अब मैं I'll not be repeating this that rising air masses will cause rain. याद कर लो उसको, समझ जाइए उसको. Decrease in temperature, increase in RH, supersaturation और बारिश. Let's see polar areas, distribution of rainfall पढ़ेंगे हम. Let's see that. ये दो points done. आगे बढ़े. Okay. See now stability and instability कैसे affect करेगा. I'll take the same example. This is a part of air mass. अभी लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझिए. This is an air mass which contains whatever temperature it has, 10, 12 degrees Celsius. The air mass is rising and it is cooling at the rate of moist adiabatic lapse rate, the same lapse rate. Right? It rises and the temperature decreases at MALR. What is moist adiabatic lapse rate? It is higher than normal lapse rate or less than that? Less than more normal lapse rate. So if MALR is less than environmental or normal lapse rate, इस पॉइंट को समझिए. After 1 kilometer, suppose both of them have the same temperature, 10 degrees Celsius और इसका भी 10 degrees Celsius, and the air is continuously rising. After 1 kilometer of ascent, environment has a temperature of 3.5. नॉर्मल जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर वो 3.5 होगा 1 किलोमीटर के बाद. इस एयर मास का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है. इट्स 5 डिग्री सेल्सियस. ऑब्वियसली इट विल कॉज रेन ऑन द वे, राइट? राइजिंग एयर मास है तो अनस्टेबल होगा. आफ्टर 1 किलोमीटर, लेट्स सी द टेम्परेचर ऑफ दिस. द एयर मास हैज अ टेम्परेचर ऑफ 5 और बाकी का टेम्परेचर कितना है?
3.5. Is air mass warmer than the surrounding? Yes. If it is warmer, it must be lighter. और अगर lighter है तो क्या होगा air mass में? Rise करेगा. Sure, the air mass is further going to rise. Rise हुआ तो क्या होगा? Temperature decreases, RH increases, and it will cause rainfall. मतलब unstable condition रहेगा. Let us assume that there comes a condition in atmosphere where whatever moisture the air had carried, whatever vapors the air had carried with the from the surface, all of that are got condensed. All of them have got converted into water droplets. मतलब जितना हीट, लेटेंट हीट उसके पास था, सब कुछ स्पेंड हो चुका है वहां तक पहुंचने के लिए. क्लियर? आफ्टर दैट, this MALR, the rate here at which this air mass will decrease, will be equal to normal lapse rate, environmental lapse rate. जिस रेट पर ये ठंडा हो रहा है उसी रेट पर ये भी ठंडा हो रहा है. कैन एयर मास राइज? नो. क्या होगा फिर? इक्विलिब्रियम आएगा. राइट? आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स, air mass has a temperature of suppose 0 degrees Celsius, atmosphere has a temperature of 0 degrees Celsius. Can this air mass further rise? No. क्या होगा फिर? Equilibrium. Neutral equilibrium. It is unstable till MALR is lesser than normal lapse rate. या दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? Till environmental lapse rate is greater than moist adiabatic lapse rate. बात एक ही है, राइट? एनवायरमेंट का टेम्परेचर 6.5 से कम हो रहा है एंड इट इज 5. Till this phenomena is taking place, what will happen? The air still remains warm and atmospheric the instability will be observed. Air will continue to rise. That is the primary process of stability. Unstable conditions, atmospheric instability. कि जो एयर मास है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहना चाहिए किसके कंपैरिजन में? बाकी की एयर के कंपैरिजन में. अब इसी को हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. वी रिप्रेजेंट द इंस्टेबिलिटी इन डिफरेंट फॉर्म. एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी, पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी, कंडीशनल इंस्टेबिलिटी. Right? There are different conditions. But primary reason for instability is that air mass should be warmer than surrounding. अगर एयर मास बाकी के सरफेस से गर्म है तो ये राइज करता चला जाएगा. अगर ठंडा हो गया तो सबसाइड करेगा. स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन. So this is first example of any instability. So let me draw this lapse rate. ये ग्राफ तो समझ में आना चाहिए. This is temperature, right? 20, 30, 40, and this is like 30. This is 20, this is 10, this is 0, and so on. And this is elevation, height. So, this is the rate at which moist adiabatic or moist air mass is decreasing. And the temperature is decreasing at a particular rate. Right? Environmental lapse rate अगर ज़्यादा है, तो environmental lapse rate this should be the temperature. बहुत जल्दी temperature कम होना चाहिए. So this represents ELR and this represents MALR. What will happen in that case? Air mass will have higher temperature than the surrounding air. इतना पॉइंट लिखे पहले, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्टेबिलिटीज देखते हैं. फर्स्ट यू गेट द क्लैरिटी ऑन व्हाट इज स्टेबिलिटी एंड व्हाट इज इंस्टेबिलिटी. एनीवन नॉट क्लियर विद दिस पॉइंट? ये कहानी, ग्राफ छोड़ दो, ये वाला पार्ट. एवरीवन इज क्लियर? ओके, लिखिए फिर. टेक द हेडिंग. लिखा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी. हेडिंग आज का टॉपिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी. लेट्स राइट दैट. Stable air
is an air mass which is either static or subsides full stop. Subsiding air mass undergoes increase in temperature and decrease in relative humidity full stop. Unstable air is a condition when an air mass rises, it undergoes decrease in temperature along with the decrease in humidity capacity. Full stop. RH, relative humidity, increases once it crosses supersaturation limit, that is RH bracket में RH more than 100%, precipitation occurs. Full stop. Okay. The stability and instability in air, stability and instability in atmosphere is determined by concentration of water vapors. Full stop. When a moist air mass rises, it undergoes adiabatic cooling. That is due to expansion of air. Full stop. The latent heat of condensation is released.
by water vapors that reduces lapse rate, that reduces lapse rate, called as moist adiabatic lapse rate, called as moist adiabatic lapse rate. Moist adiabatic lapse rate, right? Bracket में 3.5 to 6 degrees Celsius per kilometer. Done. Next लिखिए, when a dry air mass elevates or rises, or dry air rises due to lack of moisture, and the release of latent heat, cooling process is rapid. Cooling process is rapid. Cooling process is rapid. It is called as dry adiabatic lapse rate. Dry adiabatic lapse rate. Put a bracket 10 degrees Celsius per kilometer. Done. Next, types of instability. Types of instability. Types of instability. No, it's dry air mass. Because why not? Let's see that. See, यही stability, instability है. So types of instability we are writing. So unstable air mass क्या है? We understand that. Why is it so? First type of instability is called as absolute instability. Absolute instability. Absolute instability is the same what we have discussed so far. What did we discuss in this case? In absolute humidity, instability, कि अगर ये like this is the elevation and it is a temperature, right? अगर environmental lapse rate follow करें, that is it is 6.5 degrees Celsius per kilometer. So this is the environmental lapse rate normally. This is the environmental lapse rate, ELR. It is following that normal condition 6.5. और moist adiabatic lapse rate जो है, air mass is losing temperature at a lesser rate than environment, than normal lapse rate. So temperature will be slightly higher.
You getting this? So this will be moist adiabatic lapse rate. This condition is called as absolute instability. What is that absolute instability? आप इसको ऐसे समझे कि moist lapse rate is less than environmental lapse rate. और जैसे books में लिखा या material में लिखा होगा, it says environmental lapse rate is greater than NLR. Is it okay? देखिए क्या इसका मतलब कि environmental lapse rate, like suppose 6.5 है, and the moist air is losing temperature at the rate of 5 degrees Celsius. So which one will remain warmer? Atmosphere or the moist air? Moist air is going to remain. मान लेते, just hypothetically, if moist adiabatic lapse rate was 10, it was equal to dry adiabatic lapse rate. Will it rise? No, remain stable. Clear? That is, environmental lapse rate is greater than moist adiabatic lapse rate, or moist adiabatic lapse rate is less than environmental lapse rate. So environment is cooling slowly, environment is cooling rapidly, moist air is cooling slowly. तो वो गर्म रहेगा बाकी के कंपैरिजन में, तो कंटिन्यूसली राइज करता जाएगा. एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कन्वेक्शनल रेन, जब आप कन्वेक्शनल रेन पढ़ेंगे, व्हाट इज कन्वेक्शन? द हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस थ्रू मूवमेंट. तो जब एयर मास कन्वेक्शन के कारण राइज करे, वो केस में हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी. Because lot many times I get this question in classes in convectional rainfall कि मान लेते हैं rise किया and humidity is 110%. Will it be 10% rainfall or 100 more than 10% rainfall? Extra पानी कितना है इसमें? 10% rainfall. So it will drop that 10% of water. Clear? तो बारिश रुकना चाहिए. लेकिन याद रखें इस बात को कि अगर ये MALR फॉलो कर रहा है, MLR कम है ALR से, तो दिस विल बी हैविंग हायर टेम्परेचर. क्या होगा? एयर मास फिर राइज करेगा तो फिर भी क्या होगा? डिक्रीज. तो वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन विल बी मेंटेन टिल इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग अपवर्ड्स. दिमाग में क्लियर हुआ? No problems with absolute instability. Are we sure? Okay, likhiye absolute, take the heading absolute instability, write about it. Absolute instability arises when moist air mass follows a lapse rate less than environmental lapse rate. Less than environmental lapse rate. Follows a lapse rate less than environmental lapse rate. Full stop. कंटिन्यू करें. द लेटेंट हीट रिलीज decreases the lapse rate of a moist air It remains warmer and lighter than the surrounding air mass. Warmer and lighter than the surrounding air mass. Therefore continues to rise. And shows absolute instability.
पहले हम लिख चुके हैं व्हाट इज मेंट बाय अनस्टेबल एयर, शोज एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी। फुल स्टॉप। सो जहां आपने ये लिखा है एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी, यू कैन राइट दिस ELR is greater than MALR, right? If you haven't drawn graph, इसको दोबारा ड्रॉ करें, और मतलब अच्छे से ड्रॉ करें। अगर नहीं ड्रॉ किया तो, अगर ड्रॉ कर लिया तो कुछ वैल्यूज लिखें ताकि आप जब घर जाएं तो समझ में आए। दिस वाज सपोज 10, दिस इज 5, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, and if it follows the normal lapse rate is 6.5, and this is height. After 1 kilometer, the temperature is going to be normal lapse rate में 3.5, somewhere here. After 2 kilometer, the temperature is going to be minus 3.5 minus 6.5, कितना हो गया? -3. So it will be somewhere here, less than 0. So you'll find a rapid decrease in temperature with increase in elevation. ये कौन सा lapse rate है? ELR. और अगर मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉलो कर रहा है, इट इज 5, तो सरफेस पर 10, 1 किलोमीटर के बाद कितना होगा? 5, राइट? आफ्टर 2 किलोमीटर इट विल बी 0. तो यहां पर -3 और MALR का कितना होगा? 0. सो इट विल बी दिस कर्व शोइंग MALR or SALR, whatever you call it as. Draw on this one. ग्राफ ड्रॉ करिए, एग्जाम में एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो सही ग्राफ ड्रॉ करना, इट विल बी यूजफुल. सो राइट वन लाइन एज ELR, दिस इज SALR, लेबल करो इसको दैट ELR इज ग्रेटर देन SALR. लैप्स रेट क्या है? कितनी जल्दी खर्चा हो रहा है? तो खर्चा जल्दी है तो टेम्परेचर कम होगा. श्योर? कंफ्यूजन? ग्राफ इज क्लियर? चले आगे फिर. सेकेंड टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी. जस्ट एड अ लाइन हियर. दिस टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी, जस्ट वन मोर लाइन. This type of instability occurs in convectional rainfall. Occurs in convectional rainfall. Convectional rainfall. Second type of instability लिखिए conditional instability. Conditional instability. Again same, ऐसा नहीं कि कुछ difference है यहां पर. Conditional instability. Instability means that air mass is having a warmer temperature than surrounding, only then it can rise. But what is the condition in this? In conditional instability. Chaliye, let's follow this point. इंटेलिजेंट क्लास, अगर कंडेंसेशन 0 है या 0 के आसपास है, देयर इज लेस और नेग्लिजिबल कंडेंसेशन, व्हाट इज द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट? डज कंडेंसेशन टेक प्लेस इन नॉर्मल कंडीशन? नो. फॉग बनता है नॉर्मल कंडीशन में. इज फॉग फॉर्म्ड स्टेबल? अगर फॉग बना स्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल है? सोच के देखो. स्टेबल? वाई स्टेबल?
क्लियर स्काई कंडीशन, टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में बना ना फॉग, मतलब इट्स अ क्लियर स्काई कंडीशन, स्टेबल एयर। ड्यू बनता है, फ्रॉस्ट बनता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो मतलब कंडेंसेशन तो होता है। नॉर्मल कंडीशंस में कंडेंसेशन होगा या नहीं, तभी तो 6.5 है ना। और जहां कंडेंसेशन बिल्कुल कम है, व्हाट इज द लैप्स रेट देयर, 10 डिग्री सेल्सियस। I'm repeating this point. If you are thinking that condensation is zero in the normal condition, absolutely wrong. Condensation does happen in the normal conditions. ऐसा थोड़ी ना कि कंडेंसेशन जीरो होगा, वाटर वेपर सिर्फ वेपर्स में रहेगा, वाटर ड्रॉपलेट में नहीं होगा। ऑब्वियसली देयर विल बी कंडेंसेशन, बट द कंडेंसेशन इज नॉट दैट एक्सट्रीम इन नॉर्मल कंडीशन। और ड्राई कंडीशन में कंडेंसेशन लेस। व्हाट इज द लैप्स रेट देन? इट फॉलोज ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इफ कंडेंसेशन इज वेरी लो। कंडेंसेशन रेट अगर नॉर्मल है तो कितना फॉलो करेगा? 6.5। कंडेंसेशन रेट बहुत ज्यादा है तो कितना फॉलो करेगा? MALR। राइट, थिंक, पे अटेंशन टू दिस पॉइंट। इफ, इसीलिए मैंने पहले कंडीशंस में कहा कि ये जो 3 कंडीशंस देखी आपने, हियर देयर इज अ नॉर्मल रिलीज ऑफ लेटेंट हीट, मतलब कंडेंसेशन होता है यहां पर, ऐसा नहीं कि जीरो कंडेंसेशन होगा नॉर्मल कंडीशंस में। राइट, इन दिस केस द कंडेंसेशन इज वेरी एक्सट्रीम, in this case the condensation is moderate, in this case condensation is very very low. Clear? So it has a lapse rate of 10, it has a lapse rate of 5, it has a lapse rate of 6.5. So my question was that if the condensation is absent, if the condensation is absent, what is the lapse rate that an air mass can follow? That is close to 10, that is dry adiabatic lapse rate. We're sure about it? Sure? कोई कंफ्यूजन इसमें? श्योर? अच्छा, कंडेंसेशन किसी एयर मास में सरफेस के पास होगा, इसके चांसेस थोड़े कम हो गए। कब होगा सरफेस के पास? जब when the moisture content is very very high. Clear? And there's too much of moisture present. Only in that case condensation will take place right at the from the sea level. वरना कंडेंसेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एयर को राइज करना पड़ेगा। इट हैज टू राइज अ बिट टू कॉज कंडेंसेशन। बस ये ट्रिकी पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन नहीं करना, बस समझ जाना एक ही बार में। मैं एक एयर मास बना रहा हूं, इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, राइट, इट इज अटैच्ड टू द सरफेस, इट कंटेन्स सम बिट ऑफ वाटर वेपर्स। टेम्परेचर इज हाई तो कंडेंसेशन होने का चांसेस नहीं है। श्योर? एयर मास विल राइज up to let's say 500 meters, 1 kilometer, whatever. तो कंडेंसेशन यहां पर शुरू होगा या 500 मीटर्स पर? 500 मीटर्स पर, और मे बी एट 1 किलोमीटर, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो। लॉक करें? सो बिटवीन सी लेवल टू दिस 500 meters और 1 kilometer, व्हाट इज द लैप्स रेट दैट इट शुड फॉलो? Is condensation taking place? अगर कंडेंसेशन नहीं होता है, व्हाट इज द लैप्स रेट दैट एयर मास फॉलोज? ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। एनवायरमेंट में भी ऐसा ही होगा और एयर मास में भी ऐसा ही होगा। इन एनवायरमेंट ऑल्सो द कंडेंसेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस विद इन 500 meters। कंडेंसेशन एक हाइट पर होगा। क्यों कंडेंसेशन एक हाइट पर होगा? बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई। क्लियर? So between sea level to 500 meters, will there be condensation? No condensation. If there is no condensation, will there be any latent heat released? If there is no latent heat released or less latent heat released, what is the lapse rate? Dry adiabatic lapse rate. Sure? तो मतलब एक हाइट के जाने के बाद कंडेंसेशन होगा ना, एकदम बेस पे तो कंडेंसेशन नहीं होगा। एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर? राइट, मुझे एक लिफ्ट मिल रहा है किसी हद तक, उसके बाद मेरा खर्चा शुरू होगा। आई हैव टू स्पेंड फ्यूल, राइट? तो बिटवीन द सरफेस एंड दैट हाइट आई विल नॉट बी स्पेंडिंग एनीथिंग, राइट? I will not be getting that any
लेटेंट हीट एटसेट्रा, तो जो लैप्स रेट है कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इट इज द सेम फॉर एटमॉस्फेयर एज वेल एज सेम फॉर द एयर मास. और आप कन्वेक्शन रेनफॉल में कंफ्यूज हो जाओगे, वरना किताबों में लाइक बुक्स में क्या लिखा है हम नोट्स में भी लिखेंगे उसको. इफ यू रीड दैट केयरफुली, इट सेज दैट इनिशियली इट फॉलोज मॉइस्ट एयर फॉलोज अ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड देन इट फॉलोज MALR. You have read that point? Why does it follow DLR at some height? It can be, देखो 100 मीटर्स हो सकता है, 500 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि कंडेंसेशन एक हाइट के बाद शुरू होगा ना. सब्सिडी आना एक टाइम के बाद शुरू होगा, तब तक आपको खुद से लिफ्ट करना है. लॉक करें? एवरीवन गेटिंग क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस? यस, फास्ट. कंडेंसेशन के कारण क्यों राइज करेगा भाई? धक्का लग रहा है, कन्वेक्शन फिनोमेना हो रहा है, ओरोग्राफिक फिनोमेना है, फ्रंटल फिनोमेना है. एयर मास राइज करने का कारण क्या है? कन्वेक्शन, ओरोग्राफिक, फ्रंटल. कन्वेक्टिव करंट्स बहुत स्ट्रांग है तो एयर मास को जबरदस्ती राइज करवा रहा है. श्योर? एवरीवन गेटिंग दिस क्लियर? लॉक करें फॉरएवर? ओके, नाउ सी दिस एयर मास इज राइजिंग, तो यहां पे टेम्परेचर लेट्स सपोज 10 था, आफ्टर फ्यू मीटर्स इट बिकम्स 5 डिग्री सेल्सियस. एनवायरमेंट का टेम्परेचर भी कितना होगा? 5 डिग्री सेल्सियस. विल एयर मास राइज? नो. अब ये किस में आ चुका है? इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया. वी कॉल दैट एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. एयर मास भी सेम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर भी सेम टेम्परेचर. Now that is why we use the term conditional instability to this. Suppose the convective currents are very strong, right? Convective currents are very strong. तो वो इस threshold के ऊपर लेके जाएगा एयर मास को. Once it crosses that threshold, क्या शुरू होगा फिर? Cooling होगा. That means condensation process will start, latent heat will get released, and then it will follow the same process that we had discussed. लॉक करें? तो let me cover up this point again. This is suppose 10 degrees Celsius. After 500 meters, air mass has temperature of 5, environment has a temperature of 5. So it should not rise. लेकिन अगर convection बहुत strong है, it's a very strong convection, and because of that very strong convection, it crosses that threshold. Threshold समझ रहे हैं कि एक height के ऊपर जाना शुरू कर दिया, जहां पर cooling process start हुआ. As it crosses this, then latent heat of condensation is released, and once it starts releasing, now which lapse rate will it follow? Moist adiabatic lapse rate और SALR. समझ में आया? अब SALR है, बाहर का टेम्परेचर क्या है? Like what will environment follow? The normal lapse rate. Now MALR is less than ELR. पहले क्या हो रहा था? MALR और SALR, ELR दोनों एक जैसे हैं. Understanding what is condition? Conditional instability only when an air mass is rising above certain threshold, above certain elevation, after which the condensation begins. Right? So whether it is SALR or MALR, बात एक ही है. ये कब फॉलो होगा? जब कंडेंसेशन शुरू होगा. तो कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस एट सर्टेन elevation. Yes, first. और एक लिमिट के बाद कंडेंसेशन स्टार्ट होना होगा. उसके बाद ये एयर मास क्या फॉलो करेगा? उस तब तक क्या फॉलो करेगा? DALR, राइट? ड्राई एडियाबेटिक लैप्स. क्योंकि कंडेंसेशन 0 है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. लॉक करें या नहीं? हर किसी सिचुएशन में होगा एक्सेप्ट thunderstorms जैसा कंडीशन में, या एक्सेप्ट these heavy rainfall conditions जहां पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. साइक्लोनिक कंडीशन में ये फॉलो नहीं होगा. इट विल बी मोर लाइक the convection phenomena. Every convection phenomena may have this condition कि पहले हद तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद MALR शुरू हुआ. लॉक करें या नहीं एवरीवन? तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस graphically? Understand this graph first.
This is ELR. Yeah. Suppose this is ELR. This is MALR. Both of them will have common. After that, the air mass will follow MLR. This will be ELR. You understanding this common blinds? क्योंकि दोनों एक जैसा लैप्स रेट फॉलो कर रहे हैं, ड्राई एडियाबेटिक. एक हाइट के बाद कंडेंसेशन शुरू हुआ, MLR is reduced, moist adiabatic lapse rate is reduced, and ELR continues. Done. Conditional instability में condition क्या है ये clear? Air mass must go beyond a certain threshold. No, absolute instability is a very very special case. जब बहुत ज्यादा moisture होगा और the vapor pressure is so high that condensation is starting almost from the surface only. So you will have this kind of a condition in case of absolute instability. Right? बहुत ज्यादा vapor pressure होगा तब absolute instability बोलेंगे. Fast पूछे. पहले उड़ने दो हवा को, सिंक करवाएंगे. अगर सिंक हो गया तो क्या कहेगा उसको? स्टेबल है. Isn't it? स्टेबिलिटी भी तो आने वाला टॉपिक, राइट? Instable. We have another term for that, right? Okay, आगे चले फिर. क्या लिखा हमने? Conditional instability. Let's write about conditional instability. Now this type of instability, is observed when a moist air is forced to rise upwards, initially it follows higher lapse rate that is DALR. After a certain elevation, as the process of condensation begins, latent heat is released. Moist air follows MALR, that is less than environmental lapse rate. Less than environmental lapse rate. Okay with it? तो दो कंडीशंस लिखेंगे यहां पर. पहला क्या लिखेंगे?
MALR, that is moist air, is equal to dry adiabatic lapse rate initially, and after that क्या लिखेंगे हम? Environmental R, MALR is less than environmental lapse rate. Conditional instability is clear. दो एब्सोल्यूट और कंडीशनल अभी तक कहा. अब थर्ड आता है मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी. ये दो तो समझ में आ भी गया होगा, अब नहीं आएगा. मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी. लिख लिया यहां तक. टेक मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी नेक्स्ट हेडिंग. एंड लेट अस विजुअलाइज. ये एग्जाम्पल करेक्ट नहीं है. दिस एग्जाम्पल दैट आई एम taking is not correct for giving examples in answers and so on, just to help you understand this point. Then let's suppose we have a desert like condition somewhere. एक desert region है, Peru, Atacama, any desert, even hot or cold desert, it's a dry condition. और उस ड्राई कंडीशन में कहीं से, जैसा ड्रायर कंडीशन, कहीं से एक मॉइस्ट एयर चला आता है. एब्सोल्यूट ड्राई कंडीशन है. एब्सोल्यूट ड्राई मीन्स समथिंग लाइक लद्दाख, मंगोलिया, इंटीरियर ऑफ साइबेरिया, इवन इंटीरियर्स ऑफ सहारा डेजर्ट. श्योर? Okay, so air mass is trying to rise. Obviously, it will rise. इसके आसपास का जो हवा है ना, will it cool faster or slowly? Very fast. Not even 10. Sometimes there can be conditions where the lapse rate is even 15 degrees Celsius per kilometer. 10 तो एक representative figure है ना. Suppose there's very low amount of moisture, only 1.1% moisture content है. Absolute humidity ना के बराबर है. Whatever is the temperature. Any latent heat released? No. Environmental lapse rate is extremely high. Extremely high means it can be 15 degrees Celsius per kilometer. So surface has a temperature of 40. After 1 kilometer of ascent, now the temperature will be 25. Then it goes for another 1 kilometer. The temperature is going to be 10. Then again 1 kilometer, the temperature is going to be -5. जैसे डेजर्ट्स में होता है, जो इंटीरियर डेजर्ट्स हैं या फिर एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में, that conditions, you will find that temperature is very high near the surface. आप राइज करते चले जाइए, बहुत तेजी से टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा रिलीज, तो बहुत तेजी से टेम्परेचर कम होता चला जाएगा. दैट मीन्स वी कंसिडर दिस एन एक्सेप्शनली हाई लैप्स रेट. राइट, इट्स एन एक्सेप्शनली हाई लैप्स रेट. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? एंड दिस अ मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर हैज एंटर्ड हियर. इसमें तो अपना मॉइस्चर तो है, क्लियर? अपना मॉइस्चर है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट? एयर मास विल राइज मोर रैपिडली, इजंट इट? सराउंडिंग एयर ठंडा हो गया, और ये जो एयर है इसमें थोड़ी गर्मी है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट रिलीज. व्हाट विल हैपन? राइज. दिस इज स्टिल वार्म एंड दिस हैज सिग्निफिकेंटली गॉन लोअर. राइज. कुछ थंडरस्टॉर्म जैसा कंडीशन बन सकता है, बिकॉज दिस राइजिंग एयर मास मे गेट रिप्लेस विद द कोल्ड एयर आल्सो एट टाइम्स.
श्योर। अब इंडियंस अगर बुर्किना फासो या अफ्रीका में जाए, वट एवर इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, वट एवर इज देयर सैलरी, दे विल ऑलवेज लुक रिचर, isn't it? Because paying capacity, etc., etc. Why? Because surrounding air does not have any moisture content, and latent heat is very low. Release is negligible. So the heat loss in this temperature is very, very fast, very rapid. जबकि moist air में heat loss उतनी तेजी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि moisture है उसमें, saving है उसके पास. So what will happen? It will elevate faster and can bring unstable condition. इसको mechanical instability कहते हैं. Why this mechanical instability? Sometimes because it is rising, the cold air will fill the space. Isn't it? What will happen if it is filling the space? Push it upwards. Understanding why? Surrounding air is extremely dense, cold, और ये जो है relatively lighter. Not only it is rising because of that rise in being lighter, the cold air will keep on replacing this lower atmosphere, and as a result, rise. Mechanical instability. क्या कहेंगे उसको? Almost thunderstorm like conditions. I'm not saying that thunderstorm है, thunderstorm like conditions. टॉर्नेडोज वगैरह कुछ इसी तरह से बनते हैं, क्योंकि जब ये कोल्ड एयर इसको रिप्लेस करता है ना, वार्म एयर जो मॉइस्ट एयर है, क्या होगा? उसको राइज करवाएगा. वी मे नॉट हैव अ वेरी हेवी रेन, वी मे नॉट हैव लाइक टॉरेंशियल रेन, बट आफ्टर ऑल इट इज एन अनस्टेबल कंडीशन. गॉट सम आइडिया? When environmental lapse rate is exceptionally high, even higher than dry adiabatic lapse rate. लॉक करें? और बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसा होगा, साइबेरिया जैसी जगह में ऐसा होगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इट कैन हैपन लाइक दिस, दैट इट इज एक्सेप्शनली हाई. तो ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत है, बट जब आप पढ़े एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज हायर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द टेम्परेचर इज मोर देन, टेम्परेचर डिक्रीज इज मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. लॉक करे? पक्का? इंस्टेबिलिटीज को वापस देखिए शांति से, जस्ट इम्बाइब दिस थॉट, जस्ट गेट इट इन योर हेड. Because बहुत सारे लोग 90% ऑफ पीपल आर नॉट एग्जैक्टली क्लियर विद द स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी. वो जितना भी सविंदर सिंह पढ़े या कोई भी पढ़े, वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, जब आप बहुत सारी बार कितनी भी किताबें पढ़े. इसको बस यहां पर क्लियर करो. व्हाट इज एब्सोल्यूट? इज दैट क्लियर कि सरफेस से ही कंडेंसेशन रिलीज हो रहा है, राइट? अनस्टेबल कंडीशंस. कंडीशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट. What is conditional? What is conditional about condition? Clear? Third क्या है? Mechanical. Mechanical क्यों है? क्योंकि बाहर का एयर बहुत ठंडा हो रहा है. It can come to the lower atmosphere and push the warm air mass upwards. वो चला गया टाइम, तब आप दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे थे. इसी मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी में, व्हाट इज इन द मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी? द सराउंडिंग एयर इज एब्सोल्युटली ड्राई. जब बाहर की एटमॉस्फेयर में कोई भी जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो लेटेंट हीट कुछ भी रिलीज होगा क्या? नो. अगर लेटेंट हीट नहीं है तो कूलिंग इफेक्ट तेज होगा. कितना होगा वो? 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. दिस पर्टिकुलर एयर दैट इज रिलेटिवली वार्मर या मॉइस्ट एयर, whatever, it is not warm, it is just moist air. अब जब इसमें latent heat release होगा, ये क्या follow कर रहा है? MALR. The temperature decrease here is at the rate of suppose 5. बाहर का टेम्परेचर किस रेट पे कम हो रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर मान लेते हैं टेम्परेचर जो था that was 40 and this was also 40. Outside that temperature is 15 and this air mass after 1 kilometer is going to be around 35. थोड़ा राइज किया
ये 1 किलोमीटर के बाद कितना हो गया 30, बाहर का टेम्परेचर 10। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास एंड 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ air mass. What will the air mass do? Underneath the warm air, and what will happen? Push it is up. इसको और पुश करेगा अपवर्ड्स, इसलिए मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी का एक्सट्रीम थंडरस्टॉर्म कंडीशंस आए। देन लिखिए कंडीशनल इंस्टेबिलिटी, सॉरी मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी, राइट। मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी occurs when mechanical instability occurs when environmental lapse rate or normal lapse rate is exceptionally high, that is nearly 15 degrees Celsius per kilometer. Nearly 15 degrees Celsius per kilometer. Full stop. In this case, moist air aggressively rises upwards cold air fills the lower or underlying air it's a condition when environmental lapse rate is greater than dry adiabatic lapse rate. ELR is greater than DALR. Right? इसको और लिखना चाहते हैं, you can write one more line. Environmental conditions rapidly cool providing a lift to moist air mass. लॉक करें इसको अब, श्योर। तीनों तरह की इंस्टेबिलिटी क्लियर। So instability is not only dependent upon the lapse rate that an air mass follows, it is also dependent upon environmental lapse rate surrounding air. You are ready for one more type of instability? Unstable तो नहीं हो जाएंगे, हो भी गए तो unstable air mass बारिश ही तो करेगा। Stability is very dangerous in life, isn't it? Unstable रहना जरूरी है। Confidence is very dangerous. थोड़ा under confidence बहुत जरूरी है, isn't it? Under confidence will keep you going. Potential instability, fourth instability. Potential instability, fourth type of instability. Potential instability. Mountains पे तो गए होंगे आप लोग, everyone? No? हवा में तो होंगे आप लोग, ये तो है ही है, मुझसे पूछिए ऑफ कोर्स।
So if we have an air mass which is very thick and very large air mass, right, a very big air mass like 4 kilometer, 5 kilometer vertical extent है, बहुत बड़ा air mass है. Let's take an example of a mountain. Do you find the moisture similar at every part of the mountain? तो कहीं लगता है कि valley के आसपास moisture content थोड़ा ज्यादा है, right? If you rise little above the surface, you may find moisture content lesser. यहाँ पर moisture content बहुत कम होगा. So in the same air mass, right? Vertically अगर हम move करें, same air mass, a lot of moisture is there in the near the surface, then moisture is less, then moisture is even less. So condensation तो हर layer में हो रहा होगा. अब ऊपर वाली layer में condensation है ही नहीं because there is less moisture content. Lower layers will undergo a lot of condensation process. If the condensation process varies in different layers due to presence of moisture content there, can one air mass or this huge air mass follow the same lapse rate? No. नीचे वाली layers में हो सकता है lapse rate ज्यादा हो, या lapse rate moist side में कम हो lapse rate. Upper layers where the moisture content is less, it may follow a higher lapse rate. So mountains में या fronts में, fronts अभी पढ़ोगे आप. Fronts में we'll see that two contrasting air masses converge, etc. So let's suppose condition of a front. Warm front will have a lot of moisture content and it has less moisture content. जब दो contrasting air masses टकराएंगे, अब आगे हम देखेंगे उस टॉपिक को. So there's a warm air mass which will have relatively more moisture content, cold air mass which has a relatively less moisture content. If the moisture content is more in this case, in the warm air mass, lapse rate will be different. Cold air mass में moisture content कम है, lapse rate is going to be different. So if there is single air mass, like suppose in the mountains, etc., and they follow different lapse rate, that is called as potential instability. It's not an unstable condition as such. ऐसा जरूरी नहीं कि lapse rate अलग अलग होगा तो air mass. Sometimes this air mass can rise. So let's write this potential instability. It is observed in extensive and thick air masses. Observed in extensive and thick air masses, extensive and thick air masses that undergoes differential rate of adiabatic changes. Differential rate of adiabatic changes. Full stop. Such conditions are observed. Such conditions are observed if upper layer is dry. Upper layer is dry. Lower part of air mass has moisture conditions, has moisture. Then full stop. It shows instability. It shows instability only if the air mass is uplifted, due to mountain barrier, or a cyclonic front, or a cyclonic front. Or a cyclonic front. लॉक करें इसको. Potential instability is not an unstable condition. Let us be clear. It will show instability only if an air mass is getting pushed upwards.
या तो माउंटेन बैरियर के कारण ओरोग्राफिक रेन या फिर फ्रंटल रेन. अदरवाइज वी डू नॉट हैव एनी सच फीचर caused by instability. So हटा दें इनको. Let's revise. Be crystal clear about all the instability. First of all, you should know what is an unstable air. You're clear about it? Latent heat, इसमें कोई confusion नहीं है. Sure, everyone. So first condition is when absolute instability, when normal condition ELR is less than, beg your pardon, when ELR is greater than MALR. No confusion in this. Absolute instability. Second condition is conditional instability, in which it follows DLR initially and then goes towards MALR. Condensation एक elevation पर होगा, जो कि most of the cases है. That's called as conditional instability. Third type of instability is mechanical instability. Mechanical instability हम graph नहीं draw करेंगे. We just say that ELR is greater than DLR. Right? It is greater than DLR. That is, it can range up to 15 degrees Celsius per kilometer. Exceptional case है ये. और third is potential. I think potential instability में कोई issue नहीं होना चाहिए. Same, it's mechanical instability. Let's move towards stability. So far, it was only unstable conditions, instability, atmospheric instability. तो ये अलग अलग तरह की instability आई. क्यों आई? Why there's an unstable condition? Because there are different lapse rates. What determines lapse rate? Moisture. The moral of the story is that moisture conditions are one of the major determinants of stability and instability in atmosphere. You may get this question in exam. How is moisture responsible for stable and unstable conditions? आंसर कैसे करेंगे इसको? लैप्स रेट्स के साथ कनेक्ट करके, लैप्स रेट्स के बाद डिफाइन व्हाट इज स्टेबिलिटी, डिफाइन व्हाट इज इंस्टेबिलिटी. राइट, फॉर्मेटिंग में बताऊंगा इसके बाद. तो स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, व्हिच इज इजी. स्टेबिलिटी. Right, the condition of stability arises when an air mass cools rapidly, gets denser, full stop. There are two conditions of atmospheric stability. First लिखो stable equilibrium. Stable equilibrium. Stable equilibrium. आसान है stable equilibrium. The one that I made the mistake earlier is the equilibrium. What is that? अब environmental lapse rate अगर बहुत ज्यादा है, right? Environmental lapse rate is greater than the moist adiabatic lapse rate. It becomes unstable. What if environmental lapse rate is less than the moist lapse rate? क्या होगा तब? Stable. Understanding why is it stable? Is because environment still remains warm and the air mass that is there cools more rapidly. मतलब अगर moist adiabatic lapse rate dry की तरह behave करे, मतलब moist air mass is cooling at the rate of 10 degrees Celsius, let's suppose 10 degrees Celsius, and environmental lapse rate is 6.5, right? And air mass rising by 1 kilometer
If the temperature is suppose 10 degrees Celsius here, after 1 kilometer, the temperature of this particular air mass is going to be 0 degree Celsius, और surrounding air का क्या होगा 3.5. It is colder than surrounding. Can it rise? क्या होगा तब? Sink करेगा. So that is called as stable equilibrium. What is stable equilibrium? When moist lapse rate or moist air mass follows a dry adiabatic lapse rate. Got this clear? When moist adiabatic lapse rate is dry 10 तो हम दो जगह कंफ्यूजन आएगा यहां पर, याद रखिएगा. When MALR is equal to, that means moist air is behaving like a dry air. Clear? और दूसरा कंडीशन कब होगा स्टेबिलिटी का? When the same environmental lapse rate is less than लॉक करें. When we are writing, if you read that moist lapse rate is equal to dry lapse rate, please do not get confused. It means that moist air is behaving just like the dry air. The temperature is following the lapse rate that it follows, it 10 degrees Celsius per kilometer. या दूसरा कंडीशन स्टेबिलिटी का कब बनेगा? जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट मॉइस्ट लैप्स रेट से कम है. मतलब एनवायरमेंटल इज वार्म एंड दिस एयर मास दैट इज मॉइस्ट एयर मास इज कोल्ड. क्या होगा उस केस में? सिंक करेगा. लॉक करें? एवरीवन श्योर? So if we draw the graph here to represent this condition of stable equilibrium, देखिए, this is temperature and I'm showing this as ELR. This is ELR, environmental lapse rate, which is normally behaving. Abnormally कौन behave कर रहा है यहां पर? Moist air masses done. Not clear? If moist air is cooling faster than the environment, sure, can it rise? No, it will be drier and sink. Sure. In higher than that, what is the environment lapse rate? 6.5. So we are saying that moist air mass here is having a lapse rate more than environmental lapse rate. What can it be? Try. Clear? तो अगर हम एक assumption ले रहे हैं, we are assuming this, that if MLR is following 10 degrees Celsius per kilometer and ELR is following 6.5, clear? तो moist air rise कर पाएगा क्या? Stable होगा. Clear? Not clear with this? Moist air mass is not following its property. What is the property of moist air mass? Condensation, etc., etc. वो नहीं हो रहा है. If it is not taking place, it is following dry adiabatic lapse rate, right? 10 degrees Celsius और surrounding air का temperature कितना कम हो रहा है? 6.5. So एक height जाने के बाद moist air का temperature 0 और बाहर का temperature 3.5. Can this air mass rise further? क्या होगा तब? Stable condition. Anyone not clear with this? Right? इसको फिलहाल हटा दो. अब बताइए. लॉक करें? करेक्ट है. उसके ऊपर जाएगा क्यों? कभी कभी क्या होता है? Orographic phenomena. Suppose there's an air mass pushing towards a mountain, तो क्या करेगा? Rise करे. Convection कभी कभी strong हो गया, ऊपर condensation खत्म हो गया, like जितना भी water vapor था condensation खत्म हो गया, उसमें जो fuel लेकर आया था खत्म हो गया, और बाहर का अभी भी थोड़ा बहुत है, तब क्या होगा? Dry adiabatic lapse rate subsides. Anyone not clear with this? Yes.
मॉइस्चर आना चाहिए, एक हाइपो conditional instability, right? Unstable air mass. That's why what is conditional instability? Clear? अगर अगर पहले डीएलआर फॉलो किया और उसके बाद वो एमएलआर पर आया तो दैट्स कंडीशनल इंस्टेबिलिटी. देन लेट्स राइट डाउन स्टेबल इक्विलिब्रियम. राइट. कुछ तो राइज करेगा तभी तो टेम्परेचर कम होगा. कन्वेक्शन फिनोमेना है, एयर मास को राइज करवा रहा है, एंड इट्स नॉट अ मॉइस्ट एयर, इट्स अ ड्राई एयर, या कंडेंसेशन उतना ज्यादा नहीं होगा. इट विल फॉलो दिस. ओरोग्राफिक फिनोमेना है, orography is causing the air mass to rise, same phenomena. Then लिखे stable equilibrium. Now this condition develops when environmental lapse rate is less than moist adiabatic lapse rate. Is less than moist adiabatic lapse rate. Moist adiabatic lapse rate. Full stop. Surrounding air remains warmer whereas moist air gets denser, therefore subsides. To bring stable atmospheric conditions. Stable atmospheric condition. Second is neutral equilibrium. पहला case is stable equilibrium. Second case is neutral equilibrium. It is easy. Neutral equilibrium कुछ भी नहीं. It is followed when MALR is equal to ELR. When environmental lapse rate equals or is equal to SALR or MALR. When moist adiabatic lapse rate is equal to environmental lapse rate or normal lapse rate. Air na rise karega na sink karega. Both have the same temperature. Neither there will be upward movement nor a subsidence. Lock करें. तो stability I guess is easier, right? कुछ भी नहीं देखना, आपको देखना है कि moist air mass ठंडा हो रहा है या नहीं. If it is getting cooler, sink. Main point will be based on instability. What is absolute, what is conditional, what is potential, what is the mechanical. You're clear? Sure. मैंने कहा था बस एक ही टॉपिक पढ़ेंगे आज. Only instability, and after that we'll end the class. I hope it is sinking. घर पे कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना. Take a page and एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार, whatever time. Close your books and do that. Draw this graph. Show that stability कहाँ है, instability कहाँ है. Confuse yourself. Solve your confusion. और कल तक एकदम solidify करके आइए उसको, crystallize करके आइए. Done. Okay. So climatology में the most confusing part is this. बाकी तो आपके स्टैंडर्ड के नीचे ही है, सब हलवा है. So I'll see you tomorrow.
go through this. If you have question, we'll discuss it tomorrow. But to some extent stability clear. इसको 5 स्टार देना. 5 स्टार कहने का मतलब क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में.